हार्दिक स्वागत. We would like to welcome you all on our 1262nd webinar. Thank you for joining. Today, periodic table is there. So we are going to celebrate periodic table with our title, Permitted Chemicals for AYUSH or ASU industry. More specifically, we can say. We have respected D. Ramanathan sir from AMMOI. Welcome, sir. I would like to welcome our respected JP Singh ji, Dr. JP Singh sir, partner Shri Dhanvantri Ayurveda from Amritsar. I would like to welcome Dr. Himanshu Shekhar Tiwari from Karma Ayurved, President Technical Karma Ayurved. And I will be welcoming Dr. Naveen Garg also, AYUSH Mark Auditor and Head of the project from QCI. So, thank you very much for joining. I would like to welcome Agnihotri sir, if he is available. I hope his train is stopped at some station. Welcome, sir. Yes, fortunately, we are at Chandrasi station and this train is taking rest over here. So it's our pleasure to join with all these dignitaries of today's webinar, which is on say 1263rd webinar. And really, it's a great topic to be discussed on today. And the experienced and knowledge persons are here to share this knowledge. Actually, as far as the Ayurvedic preparations are concerned, to the classical color, they are having their own color. But since the era of patent medicines are here, then the chemicals are always there to just give a good shape, good color also, which are permitted maybe in amethyst color or red colors में बहुत सारे इसमें items हैं. So our approach and concern is that what are the chemicals which are permitted to be used over the preparations, Ayurvedic preparations, so that there should not be any injury to health or there should not be any toxic effect to the chemicals being used in this connection. So this is what we are going to learn from the stalwarts of today's webinar, especially our Dr. J.P. Singh sir is from Amritsar, having a great full length experience of this field. So goes the case with our Mehta sir from Hathras. Our Himanshu Shekhar Tiwari is very much with us, along with our sir Dr. D. Ramanathan ji. He will definitely give something. And as far as the legal concept and important concepts are concerned, Dr. Naveen ji is always with us at every point of crisis, at every point of knowledge. He is giving good knowledge, and it's a pleasure that he has completed from modern medicine, but he is became a good say auditor of Ayurvedic system of medicine. So with these starting words, I welcome all these guest speakers along with all the viewers and the listeners to this webinar. Thank you so much, and over to Dr. Pawan Maji. Namaskar. Thank you very much, sir. Thank you very much. For inauguration, I would like to invite two dignitaries today. Number one, JP Singh sir and D. Ramanathan sir. Both are two senior heading a multinational organizations. So I would like to welcome JP Singh sir. Welcome, sir. जय श्री राम. आपने यूपी वाली हिंदी बोल के सर दिल गदगद कर दिया. जय हो. स्वागत. हम अयोध्या में बैठन. जय हो, जय हो. वाह, भगवान रामलला के चरणन में. जय हो, जय हो, जय हो. So I'm very pleased that my congratulations to all my Agnihotri sir, Dr. Pamanji,
Dr. D. Ramanathan, my elder brother, and Dr. Naveen ji, and Dr. Tiwari ji. The topic is very good. Actually, I'm not at Amritsar, so I'm speaking from this my native village, which is 45 kilometers from Ayodhya. So rather, I will not be on train. But as far this the topic is concerned, it is very relevant and very specific for the industry, because those under Rule 169, it is permitted that the colors and the excipients and the flavor which are permitted under this drugs and cosmetic act, and under FSI, and under this this one other set. But as we know, under Rule 127 also, there are permitted colors also. That food colors which are to be added in our syrups, in our other preparation also. So to make uniformity, these colors are required, the flavor is required, and to preserve it, preservatives are allowed, because the as far as I understand the subject, it is regarding the chemicals to be added in the preparations. So these are the requirements, but keeping in view, there are certain limits also. If it is more than the permitted limits, so it will have an adverse effect on the health of the consumer. So we should be very, very much particular to use these colors in a minimum quantity, and so that this hazardous effect on the health of the ailing patient may not be caused. So we must be very careful. All the my industrialist friends, they must learn, and they must dedicate that they will not exceed the this permitted doses which are allowed under the Drugs and Cosmetic Act. So that action. And as far as I know, in the beginning we were not using these colors and flavor and all that, because our basic, they are plant-based raw material, and there is no uniformity in the Vata causing the different colors in the different batches. So these colors, adding the colors in the permitted quantity and the minimum quantity is necessary to have a uniformity in the market, so that the patient consuming the same coffenil syrup or crushed syrup, they should not be alleged that it is not the same thing which I had used earlier also. And same is related to the preservative also. Sometimes we add maximum preservative, because sodium benzoate, methyl paraben sodium, sodium paraben sodium. So all that, these are to be very cautious, and we should be very careful in using all these things. Other things are also their flavor is also there. All the flavor they are made from this. They are not actual flavor. They are chemically made flavors. Whether you have a this musk flavor, you may have the saffron flavor, you may have other flavor. Sometimes the consumers thinks that it is the this saffron is added in the product and all that. So it is just all, but for the batch to batch relevancy, these are required and these are to be added. So this very short my this inaugural with my other Dr. Ramanathan ji and other speakers, they will speak at length on that. So at the moment, I just wish you all best from Ayodhya ji. So the blessings of the Shri Ram Lala ji to all of us. Thank you. Thank you very much. Very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much for your blessings. Definitely,
Ayurveda has a range of preservatives, but definitely that has problems also. Rancidity, color, flavor. As I was with industry for 3 decades, more than 3 decades, it was the main problem of industrialist to manage the perception of customer. Thank you very much, sir. So now I would like to request for his inaugural speech, Dr. D. Ramanathan, sir. Dr. D. Ramanathan, sir. Welcome, sir. I think I am waiting the airport, sir. I don't know how to possible to compromise the issue here. JP Singh already mentioned all the area, Right. but the main issue that is we are the three area. One is a generic product. Second is a proprietary medicine. Third one is cosmetics and nutraceutical. So the generic products, almost 80% of the Pahle, not now, due to the non-microbial safety is all our factory and our air pollution, other water pollution. On that time, there is no question of any type of this chemical is not need now. Now, what happened now? That is air pollution and contamination, labor culture. And nowadays, the shelf life is also more required. Pahle, this Ayurvedic system is mentioned only for the patient to doctor. Now the situation is totally changed. These industry developments are there. So the industry development area, definitely we need for the preservation, color, taste, and everything we need now. And also the tablet formulation changes also required. That is the reason we can depend on this all the area. JP Singh already mentioned all the detail. So I don't want to discuss that more area also. Now, what is the main problem? We have using some preservative. The preservatives approved by the World Health Organization and food preservative. We are using the food preservative maximum 7 days or 8 days. But the food preservative daily they are consuming. Daily they are consuming, everybody, all the pickles, everything in the market is only added by the food preservative, no doubt. But we have a very, very small quantity of the food preservative. That is an unnecessary propaganda. This food preservative, this preservative is only for the shelf life, nothing to any problem. That is last 20 years we are using that problem. Nothing to happen any product for the human area. So that type of some understanding to the knowledge was these all the approved by the WHO. All the excipients are using as per the norms of the department. And why this against only for the Ayurveda we are using all this area? That is some very bad motivation is there, including our Ayurvedic doctors also. The lack of knowledge in education and the lack of knowledge of the food preservative, that is also the problems of the industry. I think JP Singh all the corrected. It's a good relevant subject, but due to my flight time is already started now. I want to go to the board now. So I don't want to explain all the details. Otherwise, I have prepared more details. What is the excipient and all the details I have. Anyhow, this is my conclusion. It's a good subject. We can need more. That is, JP Singh is an authority this area. He is using all the time. What is the relevant point? He is come to the dress control department. It's a JP Singh job. It is my experience. Thank you, JP Singh. You have done one job for this whole thing. And finally, is a subject we come to more detail. Each chemical we want to address, and what is the dosage form? How is the dosage form using the industry, and what is the shelf life? And all the area we have industry, we have a very good evidence-based records. But these records also communicate properly, educated the people. That is the reason now that is this seminar is definitely address that matter. Thank you very much. More details I will conclude, sir, next time. Thank you. Thank you very much, sir. But I would like to request both of you that I will discuss with you for your convenient date and time. So we will keep this subject again. Today is periodic table day. So we are celebrating that day with chemicals for Ayush. JP Singh, sir,
want to try say something? Sure. Firstly, I salute to Dr. Ramanathan ji. He is my junior brother or elder brother, and he is our leader, and he does all this. But as far as Dr. Pawan is concerned, because it is a subject of knowledge sharing to all, so it can be kept as per convenience of Dr. Ramanathan any day in next week, or as convenient to Dr. Pawanji. So with prayer, one day intimation that we should prepare ourselves, and we'll Right, be sir. happy to join this on this subject again. Thank you, sir. Thank you, Yes, sir. everything. We need the detailed discussion of the disintegrator. That is a disintegrant substance like a sodium and sulfate and sodium starch glycosate. And we need a more helpful of the disintegration. The number of the more developed disintegrations are available in the market. But we need added these rules also. So that also is study with the pharmaceutical industry, and it is with the compromise, without the compromise, our fundamental system indication also. That is also helpful, sir. So to that level also, discussion also we need, sir. Now the fillets, coating, solvents and preservatives, emulsifiers and antioxidants, flavoring agent, colors. Number of the items are permitted now, but need be more. Because more products are available, the latest one, but it is still not added. Why? Because of this type of the lack of the seminar, we can discuss the matter and hand over to the drug department. Definitely, we can modify the system also. Thank you, JP Singh, for your beautiful presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, both of you. Now I would like to request Dr. Himanshu Shekhar Tiwari. Dr. Himanshu Shekhar Tiwari, welcome. After you, I will present a paper, excellent critical review of additives and excipients. But initially, Dr. Himanshu Shekhar Tiwari. सभी को नमस्कार। टॉपिक बहुत अच्छा है और जेपी सिंह सर ने और इन्होंने बहुत कुछ ब्रीफ में ही पर सब कुछ बता दिया। ऐसी कोई चीज रही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा हम बताएंगे, पर लॉ की बात है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात है, तो चीजें वही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। तो थोड़ा ब्रीफ में मैं उसको बताना चाहूंगा एज पर द प्रेजेंटेशन। Chemicals in ASO system of medicines are used mostly of excipients, preservative, coloring agents. जैसे सिंह साहब ने कहा कि एक्सिपिएंट्स, प्रिजर्वेटिव, कर्लिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स की हम बात करते हैं, तो इन चारों पांचों रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। Chemicals used in the form of excipients are an important part in the formulation that decide dosage form as well as pharmacokinetics and pharmacodynamics of the medicament. Excipients are the substance or compound other than the active pharmaceutical ingredients and packaging material that affect finished product quality. हमें लॉन्ग रन में प्रोडक्ट को लेके चलना है, तो इन सब की आवश्यकता आज की तारीख में ज्यादा पड़ती है। Conventionally, excipients are included in drug formulations as inert vehicles that provide the necessary weight, consistency, and volume for the correct administration of the active ingredients and performance of technological functions that ensure ease of manufacturing. Excipients play a contributory role in the presentation of medicines on account of their pharmaceutical properties, which will be ultimately effect on pharmacokinetics and pharmacodynamics of medicines. Thus, there has to be considerable impact on the therapeutic properties of the drug. हम रैशनल की बात करेंगे, एडिटिव्स फॉर द ASO medicines, तो ease the manufacturing process. Processing of different dosage form is facilitated, enhances stability of the drug by increasing its shelf life. Mask bad odor and taste with addition of flavoring substances makes the drug form more physically appealing for the customer. अभी जो बात हो रही थी कि पहले कोई सिरप बना, उसका फ्लेवर कुछ और था, कलर कुछ और था, नेक्स्ट बैच बना, उसका कलर कुछ और आया, फ्लेवर कुछ और आया। तो इन सब चीजों से जो है कि पेशेंट को भी, और एक चीज मतलब जो यूनिफॉर्मिटी होती है, चाहे हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं,
वो सेम मिलता है। सेम फॉर द टैबलेट एंड कैप्सूल्स ऑल्सो, टैबलेट की हम बात करते हैं, कोटिंग करते हैं, सेम कोटिंग आपको मिलती है। समटाइम्स होता क्या है कि रॉ मटेरियल के डिफरेंस पे कुछ ना कुछ टैबलेट्स के या कलर चेंजेस हो जाते हैं। Now, issue whether inclusion of the preservative in Ayurvedic medicine result in change in classification to other than the medicament. जब इसके नीचे बात करेंगे, जो रेड मार्क लाइन किया हुआ है, नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर इन द नेचर ऑफ प्रिजर्वेटिव, एक्सिपिएंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स, कैरियर और व्हीकल और फिलर एक्सेट्रा। Therefore, even though these products are other than the Ayurvedic ingredients, if the active ingredients are Ayurvedic, still the medicament is classified as the Ayurvedic medicament. ये हुआ था 2018 की है, अंदर में दिया हुआ है ये। नाउ कमिंग टू द रूल 169 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है परमिटेड एक्सिपेंट्स अलोंग विद द स्टैंडर्ड्स, दैट इज एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, हेल्थिंग एजेंट्स एक्सेट्रा permitted in the Indian Pharmacopoeia, that is IP, Preservation of Food Adulteration Act 1954 and Bureau of Indian Standard Act BIS in 1986 are permitted for use in Ayurveda, Siddha and Unani drug with certain conditions. The following conditions are mentioned. The above excipients shall be used in the permissible limit as prescribed in the Indian Pharmacopoeia, Prevention of Food Adulteration, Food Products, BIS, and they shall comply with the respective quality specifications, not exceeding any specific limit or uses therein, and except hydrogenated vegetable oil. तो लिमिट बहुत जरूरी है। इट मे बी प्रिजर्वेटिव, इट मे बी एक्सिपिएंट्स, ये ना हो कि एक्टिव कम हो और एक्सिपिएंट्स की मात्रा ज्यादा हो उसमें। Only natural coloring agents are permitted under Rule 26 of the Prevention of Food and Adulteration Rules 1955 will be used in Ayurveda, Siddha and Unani drugs, and additionally color permitted under Rule 127 of the Drug and Cosmetics Rules 1945 shall be used for the proprietary Ayurveda, Siddha and Unani drugs as defined in Subclause 1 and Clause H of the Section 3 of Drug and Cosmetic Act 1940, not exceeding any specified limit of uses therein. Limit सबकी दी गई है। Preservatives and coloring agents shall be mentioned on the label for the information of the consumer as required under Rule 161 of the Drug and Cosmetic 1945. जब भी हम अभी भी हम देखते हैं कई लेबल्स पे, कई प्रोडक्ट्स पे हमें कलरिंग एजेंट का मेंशन उस पे नहीं होगा, लेबल पे नहीं लिखते हैं लोग, पर वो एज पर द रूल्स इट शुड बी देयर. Additives used in the various process and in the formulating dosage form shall be mentioned clearly with the quantities used in the application of license, and the record of the same shall be maintained by the manufacturer. ये बहुत ही फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार इश्यू होता है कि कई लोग कहते हैं, इवन ड्रग अथॉरिटीज और भी चीजें हैं उसमें, कि आपको जो एडिटिव्स हैं, इट मे बी द एक्सिपिएंट्स डिटेल्स एंड द प्रिजर्वेटिव डिटेल्स. प्रिजर्वेटिव तो हम लिखते हैं लेवल पे, एक्सिपिएंट्स की डिटेल्स नहीं लिखी जाती है. इट इज QS, क्वांटिटी सफिशिएंट करके छोड़ दिया जाता है. तो कई बार डिस्कशन होता है, तो इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि इन द एप्लीकेशन ऑफ द लाइसेंस, जो आपका लाइसेंस मिलता है, जो ड्रग लाइसेंस आप लेते हैं, उसमें उस चीज को क्लियरली मेंशन होना चाहिए, द नेम एंड द क्वांटिटी ऑफ एक्सिपिएंट एंड द प्रिजर्वेटिव्स. Manufacturer shall be responsible to ensure rationality, safety and quantity use of various excipients in the formulation. If the excipients or additives or preservatives etc. referred to in Indian Pharmacopoeia, Prevention of Food Adulteration Act 1954, Food Product Order Bureau of Indian Standard BIS 1986 is deleted at a particular point of time, this will also be deleted simultaneously for the use of AYUSH system. Following artificial sweetener as per the maximum limit indicated below may be used in the various dosage forms of Ayurveda, Siddha, Unani medicines. इसमें artificial sweetener का आपको डिटेल दिया गया. Label of the such products should carry a statutory warning stating the name and quantity of the artificial sweetener used. इसमें आप देखेंगे the recommended doses दिया गया है, जो intake यहाँ पर है US FDA के अकॉर्डिंगली, सुक्रालोज का, स्पार्टम का, सक्रीन का, इन सब का दिया हुआ है जो हम यूज करते हैं. तो वी हैव टू राइट कि कितना इसमें क्वांटिटी मिलाई गई है. 1/3 of the above ADI would be permissible for the use of ASU patients and the proprietary drugs. हम देखते हैं कि किसी भी जब शुगर फ्री कोई सिरप लेते हैं तो उसमें मेंशन किया होता है इसका किसकी क्वांटिटी.
रूल 127 की हम बात करते हैं तो इसमें कलर्स परमिटेड जो हैं ड्रग में हम यूज कर सकते हैं उनका दिया गया है उसमें। इसमें ये चीजें दी गई हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, आप नाम देख सकते हैं। नेचुरल कलर्स जो हैं इसमें, आर्टिफिशियल कलर्स कैरेमल इवोफ्लोविन दिया गया है, कोल्टा कलर्स भी हैं, और ये कलर्स की जो है कॉम्बिनेशन, ग्रीन कलर का इसका इंडेक्स कोड और इंडेक्स नंबर, केमिकल नेम, इन सब की डिटेल्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रॉपर्ली दी गई है। ये इसमें भी एल्युमिनियम एंड कैल्शियम साल्ट्स लेक्स ऑफ एनी अदर वाटर सॉल्युबल कलर लिस्टेड एबव, ये भी दिया गया है इसमें। सम कॉमन एडिटिव्स फाउंड इन आयुर्वेदा, ऐसा नहीं कि अभी मैं जस्ट सैटरडे को, इसी सैटरडे को 2 दिन का सेमिनार था झांसी CRI में रिगार्डिंग द नोवेल ड्रग फॉर्मुलेशन। तो वहाँ पे कई मॉडर्न के लोग भी आए थे, फार्मेसी के लोग भी आए थे, तो उन्होंने कई चीज़ों को डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया, और उनका एक समझाने का तरीका या बताने का तरीका ये भी था कि कई ड्रग्स आयुर्वेद में ऐसे हैं जो अपने आप में ही प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, तो कई जगह या एक्सिपेंट्स का काम करते हैं, कुछ जो होंगे जो बाइंडिंग एजेंट का काम करेंगे, तो ऐसी चीज़ें बहुत है। हम यहाँ देखेंगे प्रोबेबल, मैं यहाँ प्रोबेबल एक्सिपिएंट्स प्रिजर्वेटिव फाउंड इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सोरस में प्रक्षेप द्रव्य हैं, जैसे त्रिकटु का हो गया, कल्क है प्रक्षेप द्रव्य, मधु का काम कर ले सकते हैं। वात में प्रक्षेप द्रव्य, उसका अनुपान हम किससे दे रहे हैं, उस चीजें हो सकती हैं। वटी में बाइंडिंग एजेंट लाइक गुग्गुल, घी का प्रयोग कर सकते हैं। अवल्हे में शुगर, प्रक्षेप द्रव्य, घी, तेल, इनकी बात कर सकते हैं। स्नेह द्रव्य में तेल, घी, ये खुद ही एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। आसव अरिष्ट में सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है। कंक्लूजन में आते हैं, एडिटिव्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मेडिकल products and have major share in the formulation by showing the unique pharmacokinetics and pharmacodynamics section to complete the target of the medicines. Apart from it, these have a certain other added benefits, including enhancing the stability of the product, provide bulk of the formulation, ease manufacturing process, etc. Certain natural options of these additives are also available in our text. Uses of these additives should be in accordance with the regulatory guidelines mentioned in the Drug and Cosmetic is in mentioned quantities. Thank you. धन्यवाद. Gajab presentation. Very nice and very simple language, Dr. Tiwari. Really. Kindly share with us. So your message will be communicated to all society. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद. Now I would like to request Dr. Naveen Garg. He is also traveling. Just see the zeal of scientists. You are also going to some event. He is in also train. Agnihotri sir is in train. And Ramnathan sir is on airport. But we are together. Really. It is a great zeal. I salute you all. I salute you all. नवीन गर्ग जी, डॉक्टर नवीन कुमार गर्ग, मैं आपसे अरे जय हो, स्वागत है. हाँ, स्वागत है. प्रणाम. नमस्कार. प्रणाम जी. अभी सर मैं थोड़ा कंक्लूडिव ही बात करूंगा एक्सिपिएंट को लेके, एडिटिव्स को लेके, जो एक्सपीरियंस एक वेबिनार और रखेंगे इस पे डिटेल में. बिल्कुल थोड़ा समय दे के रखेंगे तो अच्छा रहेगा. सर अभी से समय दे दिया, 7 दिन बाद है जो परमिटेड एक्सिपेंट. हाँ. तो परमिटेड एक्सिपेंट जो DNC एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही हैं, और दोनों के बारे में मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा. तो मेरिट्स की बात करें, उसमें कुछ जितने भी एक्सिपेंट हैं वो नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल भी हैं, सिंथेटिक भी हैं, सेमी सिंथेटिक भी हैं. तो सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जिससे
वेराइटीज की आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन मार्केट में आ सके, जिसमें फूड एक्ट को भी सम्मिलित किया गया है, और जो फूड में परमिटेड एक्सीपिएंट है या इंडियन फार्माकोपियम में परमिटेड एक्सीपिएंट है, उनका भी रेफरेंस दिया है। तो जिस समय ये एक्ट बना था या जिस समय ये परमिटेड एक्सीपिएंट का प्रोविजन था, तो उन्होंने बहुत वाइडली इसको देखते हुए उनको अलाउ कर दिया था कि ये भी होना चाहिए, ये भी, या जो भी फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, तो इनका रेफरेंस दे दिया। तो उससे क्या है कि लोग अपने प्रोडक्ट अप्रूवल करने में और करवाने में भी आसानी हो जाती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इजीली प्रोडक्ट अप्रूवल कर देता है, मैन्युफैक्चरर्स उसमें लिख देता है कि ये एक्सीपिएंट हैं, ये परमिटेड है। तो बहुत सरल तरीके से सहूलियत के हिसाब से शेड्यूल टी में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में परमिटेड एक्सीपेंट की लिस्ट दी है। तो ये वाइड स्कोप के हिसाब से बेहतर है, लेकिन लेकिन जो डीमेरिट्स की हम बात करें को लेके, तो जो Your voice is not coming, doctor. Your voice is not coming. Definitely, with convenience of you, Ramanathan sir. No, your voice is not coming, doctor. No internet at your side, I hope. Connection is disturbed. So, देवेंद्र मोहता जी, आदरणीय देवेंद्र मोहता जी हाथरस से मैन्युफैक्चरर है, सीनियर, बहुत सीनियर मैन्युफैक्चरर है। आदरणीय देवेंद्र मोहता सर, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ जी, आ रही है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। अभी बीच में नहीं आ रही थी, लास्ट डायलॉग आपका सुना मैंने। जी जी जी। तो केमिकल्स के बारे में आयुर्वेद में आपका क्या ख्याल? एक्चुअली में जब से एक पुराना संबंध था चिकित्सक का और मरीज का, तब तक तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे औषधियों का निर्माण व्यापारीकरण से होने लगा है और उनकी सुरक्षा लंबे समय तक करनी पड़ती है, इसलिए कुछ चीजों की जरूरत तो है, लेकिन कुछ चीजों की लाइफ जो है हमने मेंटेन कर रखी है। जैसे चूर्ण है, उनमें किसी भी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ उतनी ही है और उतने में उसको यूज कर लेना चाहिए। हमारे प्रैक्टिशनर्स की भी आदत होनी चाहिए कि हमें जितनी आवश्यकता है हम मैन्युफैक्चरर से उतनी ही मंगावें, जिसको हम प्रिस्क्राइब टाइम में यूज कर सकें। होता क्या है, मैन्युफैक्चरर की मजबूरी होती है कि जब ज्यादा मंगा लेता है चिकित्सक, तो फिर हमें वापस भी लेनी पड़ती है। वो एक तरीके का नुकसान है। तो प्रिजर्वेटिव और ये सब चीजें अभी वर्तमान में तो केवल सिरप में और आस्वारिस्ट में, इनमें ही प्रयोग हो रहे हैं, बाकी के तो किसी में नहीं होते। टैबलेट्स में थोड़ा सा गमिंग यूज होने लगा है, क्योंकि पहले गम नहीं यूज होता था, गम यूज होने लगा है, क्योंकि अगर बाइंडिंग एजेंट नहीं होगी तो दिक्कत आती है। फिर उसकी पॉलिशिंग में कुछ केमिकल्स यूज होने लगे हैं, क्योंकि अगर टैबलेट फॉर्म में हम कभी भी जड़ी बूटियों की टैबलेट बनाते हैं तो उनकी किनारी झड़ने लगती है। उसको बाइंडिंग करने के लिए उसके ऊपर से जो लेयर चढ़ाते हैं हमें, वो एक केमिकल यूज करने लगे हैं, लेकिन बहुत थिन लेयर होती है और वो प्रेस्क्राइब्ड है, इसीलिए लोग यूज करते हैं। तो एलोपैथिक में भी यूज होती है, आयुर्वेद में भी यूज होने लगी है। तो प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए कुछ चीजों का यूज हो रहा है, करना पड़ेगा, मार्केट में है तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा। लेकिन
कुछ निर्माताओं को इसका ज्ञान नहीं है कि हमें कितना प्रयोग करना है, किस मात्रा में प्रयोग करना है, तब फिर ये दुखदाई हो सकता है। इसलिए हम सब लोगों को ध्यान में रखना होगा कि औषधि की गुणवत्ता को कम न करते हुए अगर हम इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं तो ही करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल आपने सही कहा। यदि हम फ्रेश माल बेच सकते हैं तो प्रिजर्वेटिव की जरूरत उसमें नहीं है। हमारे साथ लीजेंड रसशास्त्री आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर हैं, जो IMPCL मोहान में भी बड़े पद को सुशोभित किए हैं, टेक्निकल। मैं आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। केमिकल्स फॉर आयुर्वेद। सर हमेशा इसके विरोधी रहे हैं, मैं भी विरोधी रहा हूं, लेकिन क्या करूं, इंडस्ट्री में रह के मुझे करना पड़ता था, प्रिजर्वेटिव वगैरह सभी। आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर। नमस्कार। नमस्कार ये सर। जो स्थिति है केमिकल्स की, उसको अगर वास्तव में देखें तो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि क्लास 1 प्रिजर्वेटिव अपने आप में काम कर रहे हैं। किंतु जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते GMP के नाम से वातावरण को, कारों को, तो दवा जब खराब होती है तो नुकसान होता है। इसलिए कंपनियां तो अपने स्वार्थ में ये काम करती है, रोगी के हित में नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और इवन मेरा तो एक मोटी समझ है, आपने तो बहुत बड़े पद वाली बात कह दी, किंतु सिंपल सी आरोग्यवर्धनी वटी जैसी चीज में त्रिफला से ज्यादा प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, तब जाके वो गोली बनती है। तो बाइंडिंग एजेंट वगैरह जो है वो भी देखना पड़ेगा। बात करने को तो ठीक है, सब गूगल होता है, शिलाजीत होता है, इसलिए बाइंडिंग की जरूरत नहीं है। किंतु आर्यवर्णी वटी में बाइंडर्स के रूप में जो मिलाते हैं, जो बनाने वाला आदमी है वो सोच ले कि अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उससे ज्यादा हम प्रिजर्वेटिव या बाइंडर्स और इस तरह की चीज डालें, या बहुत सारी ऐसी दवाइयों के लाइसेंस मिल जाते हैं जिसमें इवन एक एग्जाम्पल स्वर्ण प्राशन का भी दें, तो 3 तरह के प्रिजर्वेटिव आपने उसमें मिला रखे, तो छोटा बच्चा है 1 दिन का, उसको आप दोगे तो क्या मानवता का भला करोगे? तो थोड़ा मानवता हो करके और केमिकल उस सीमा तक करें। जैसे पानी पतासा में आप साइट्रिक एसिड डाल के पानी खट्टा करके देते हो, तो खाने वाले तो खाते ही है स्वाद के लिए, किंतु कौन सा हित होने वाला है? या मैगी नूडल्स का जो साल्ट है उसको देखें, तो खाने पीने में भी आजकल वही स्थिति आ गई। तो घरल कंठ वाली स्थिति है, साथ में हो गया तब तो ठीक है, साथ में नहीं हुआ तो फिर हानि तो होनी है उससे। और इनके जो परमिसेबल प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो डाले हुए हैं, इनके साइड इफेक्ट का ज्ञान नहीं है प्रयोग करने वालों को और उनको लेने वालों को। तो एक बार वो साइड इफेक्ट्स अगर देख लें तो मानवता के नाते निर्माता भी प्रयोग नहीं करेगा। किंतु क्या है, निर्माता के सामने तो फंडिंग और फ्लो का मामला है और उनको कोई मतलब नहीं है किसी के स्वास्थ्य से। तो उस आधार पे इसको देखना चाहिए। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूं, किंतु फिर भी मैंने जो अनुभव किया कि ये बात आ रही थी आशा वरिष्ठ में प्रिजर्वेटिव डालने की, किंतु किसी जमाने में डालते थे, लिखते नहीं थे। तो प्रिजर्वेटिव का, परमिटेड प्रिजर्वेटिव की वजह क्लियर कट लिखना चाहिए क्या डाला है। ये कंज्यूमर का राइट है। आप वहां पे, आप ऑफिस में तो बता देंगे कि हमने ये डाला है साहब, किंतु आप लेबल पे वही लिखेंगे परमिटेड प्रिजर्वेटिव। तो कंज्यूमर का ही तो उसमें है कि जब कंटेंट के नाम और पार्ट यूज और सब लिखते हैं, तो प्रिजर्वेटिव में ये लाइन लिखने से मोक्ष नहीं होता। फिर आयुर्वेद में जो मात्रा है प्रिजर्वेटिव की, वो औषधि के साथ बढ़ जाएगी। तो एलोपैथी में जहां से हम इसको ले रहे हैं, वहां तो 5 mg की एक टेबलेट देनी है, उसके साथ प्रिजर्वेटिव कितना सा है या बाइंडर्स कितना है। किंतु यहाँ तो 20-20 गोली मात्रा होगी। उस समय हमारी जो क्वांटिटी है परमिटेड जो आप ले रहे हैं उसकी, वो बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से शरीर में तो उसका लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान ही होगा। इतना ही कह के आपको धन्यवाद, ये अवसर दिया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल उदाहरण सहित। सर पवन जी, हाँ पवन हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन था मेरा। क्या हाँ स्वर्ण प्राशन में भी प्रिजर्वेटिव की जरूरत रहेगी क्या? क्योंकि शहद अपने आप में भी इतना प्रिजर्वेटिव है। हाँ, घी नहीं, भी उसका प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव रिजल्ट है, क्या आता है? है। कोई मानक नहीं है ना।
और परमिटेड है इसलिए डालते हैं लोग बाग और लाइसेंस लेते हैं, और जो अथॉरिटी है वो लाइसेंस देती है। स्वर्ण प्राशन में अगर प्रिजर्वेटिव डालने की लाइसेंस ने अथॉरिटी ने लाइसेंस पे लिख के दिया है, तो इस पर तो हमारा भी विरोध जाना चाहिए। कौन देखता है सर? बच्चों को टपकाने नहीं, से आप मतलब कह है। तो सही। हाँ, आप ठीक बोले आप, बिल्कुल ठीक बोले। अग्निहोत्री सर। बात है, जब कोई टॉपिक कर छेड़ दिया जाए तो बहुत सारा ऐसा विचार मंथन आता है, तबीयत खुश हो जाती है। और लास्ट में जब बात आई स्वर्ण प्राशन वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हैं तो स्वर्ण प्राशन ताजा बनाते हैं, मतलब वो स्वर्ण वस्त्र लिया उन्होंने, और मने मने अ, 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 असमान मात्रा में जो शहद और घी वाला करके बनाते हैं और खूब उसको मंडन करके तैयार करते हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जिस दिन रखते हैं पुष्य नक्षत्र वाले दिन, उस दिन 100, 150, 200 जो भी बच्चे आते हैं, वो उस दिन ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। और सच बात है, प्रोफेसर द्विवेदी जी ने जितने अच्छे से सच्चाई बोल दी, एकदम निहायत ईमानदारी सर से एक एक मेरा शब्द तो प्रूव किया, नम्र निवेदन है कि एक एक स्वर्ण शब्द प्रूव प्राशन में आपका प्रिजर्वेटिव ज्यादा है, स्वर्ण कम है थेरेपेटिक डोज में। मतलब ये आश्चर्य की बात है, कोई नहीं तो मानक नहीं है। वी कैन कंसीडर हनी एज ए प्रिजर्वेटिव, वहां तो भी हमारी हनी है, ईमानदारी है। घी है, वो सब ठीक है, किंतु स्वर्ण की मात्रा उतनी नहीं है एक डोज में जितना नहीं है, वो प्रिजर्वेटिव जा कैसे रहा हो है। सकती है? ये भारत एक तो गरीब ये देश है, स्वर्ण कैसे प्राशन हो से सकता, क्या कैसे लाभ हो होगा सकता? सर? सही बात है, कैसे? लेकिन वो भी चाहिए तो 2 mg से भी कम में भी घोट पीस के 2 ड्रॉप डालनी है, तो वो तो बहुत, अगर ईमानदारी सही मात्रा डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। जो हमारी रेशियो अगली हो रहा है। वेबिनार की वक्ता जी, डॉक्टर सुरजीत कौर बाबा का मैं स्वागत करता हूं। I would like to welcome Dr. Surjit Kaur Babaji. Within 9 minutes, we are starting our next webinar on rose. Thank you for joining. And I would like to invite Dr. Neha Bhatt from Kenya. Dr. Neha Bhatt. oh, Neha Bhatt, very good, Yes, very Dr. good. Neha Bhatt. She has already joined. Today, first Thank you, time sir. on our platform, and she has And, been the audience for this Really, webinar. Your comment. and I really appreciate, sir, what I've heard today. मैं सुन रही थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कम्युनिटी के साथ जुड़ने का। एंड एक्चुअली मैं भी आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई हूँ। अब मैंने बाहर देशों से भी किया है आयुर्वेद का, नेचुरोपैथिक साइंस वगैरह भी किया है, बीएमएस वगैरह भी किया है, और बहुत सी मैं थेरेपी वगैरह। सीखी मैंने। तो बस मेरी प्रॉब्लम एक ही हो रही थी कि एंड ऑफ द डे मुझे कोई एलोपैथी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही थी कि सब चीजों में तो प्रिजर्वेटिव है। हम आयुर्वेदा दवा दें या एलोपैथी की दवा दें, तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो खराब तो उसकी वजह से ही हो रहे थे, चाहे वो छोटा एमजी हो चाहे बड़ा एमजी हो। तो ये एक वजह थी कि मैंने एक ऐसी थेरेपी ढूंढी जिसमें मैं घुसी, और आज मैं यहाँ पे अफ्रीका में, आप बोल सकते हैं साउथ अफ्रीका बोलें या ईस्ट अफ्रीका में फिलहाल मैं अभी हूँ। तो यहाँ कपल ऑफ इयर्स से I've been looking after of some kind of patient HIV, यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज के हमने कम से कम 500 कुछ HIV पेशेंट यहाँ ट्रीट किए, और उनमें से 200 बहुत अच्छे तरीके से बिना दवा के थेरेपी से जी रहे हैं। और दिस सेशन वाज रियली ग्रेटफुल के जो मुझे चाहिए था, जो मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे यहाँ मिला कि यस, प्रिजर्वेटिव शुड नॉट बी देयर इन द मेडिसिन्स, otherwise thing is like we are equivalent to the allopathy, people are running out, they wanted to run out because of this thing, and we are in Ayurveda, if we are introducing this thing, I don't think so we are doing the justice with our Ayurveda. Sorry if Excellent. I said something wrong, and but No, that's what my absolutely thought. right. Dr. Neha, you are absolutely right. Thank you. Thanks a lot, sir. Now I would like to request Naveen Kumar Garg ji again, if his connection is good. Dr. Naveen Kumar Garg ji, as last comment. I hope he is in the train and connection is not the good. Madam Surjit ji, Yes, as sir. final comment for this webinar, कुछ बोलेंगे? आयुर्वेद में केमिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Sir, I would just say कि poison is, if given in right quantity, becomes the medicine.
and if medicine given in wrong quantity becomes poison. So अगर मेडिसिन देने के लिए या मेडिसिन को टिकाने के लिए छोटा मोटा केमिकल अगर लगता है, so I feel that it is okay because Ayurveda medicines are very powerful. So वो भी उसका जो निगेटिव इफेक्ट है उसको भी नलीफाई करते होंगे, ऐसे मुझे लगता है सर. अब मैं बहुत छोटी हूँ, आप सब सीनियर है, so नहीं, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा. नवीन जी वेलकम. Sir, I'll just come in a moment. Within 5 minutes we are starting. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yeah. सर आप म्यूट हो गए. आप अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही है. नवीन जी. हरिओम. 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 आई प्लीज. एक दिन इसकी वेबिनार डिटेल में रखेंगे, आप लोगों की सुविधा से रखेंगे, जब कहीं यात्रा में नहीं होंगे, क्योंकि आज 3-4 लोग यात्रा में ही है. तो ये बड़ी अजीब सी एक कोइंसिडेंस है, लेकिन हम अगली वेबिनार इस सब्जेक्ट पे डिटेल में आप लोगों को सुनना चाहेंगे और इसका कुछ निष्कर्ष कर एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम देना चाहेंगे. ये हमारी प्रार्थना है आपसे. आज आपकी आवाज टेक्नोलॉजी रोक दे रही है, लेकिन आपकी आवाज इतनी ओजस्वी है कि रोक नहीं सकती टेक्नोलॉजी, आज नहीं तो कल. नेहा जी कुछ बोलना चाहती हैं? No, sir. Sorry. अच्छा. आदरणीय अग्निहोत्री सर. अग्निहोत्री सर अटक गए. अग्निहोत्री सर. प्लीज अलाउ मी. अब हम रोज पर वेबिनार करने जा रहे हैं. सभी के विचार लगभग आ चुके हैं. एक्चुअली आप कहे कुछ भी लें, जी आप शायद मेरी आवाज पहुंचेगी, आप कहे कुछ भी लें, हम वो दिन कौन सा होगा अलग बात है. हम सब लोग जीवन ज्ञान यात्रा है वो भी अंत है, तो नॉलेज कन्वे हो जाती है. वो हम सबसे छोटी निस्सा किया है. ऐसे ही नेहा जी ने भी कहा